नवा वर्ष रे आज इतिहास रचना करिछि भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था इसरो PSLV-C58 जरिया एक्सपोसैट रो सफल उत्क्षेपण करिछि इसरो। एक्सपोसैट सहित 10 अन्य पेलोड रो भी सफल उत्क्षेपण करा जायछि। एक्सपोसैट को सफलतार सहित निर्धारित कक्षपथरे अवस्थापित करा जाय पारिछि। 5 वर्षर समयसीमा भितर ए उपग्रह रहस्यमय ब्लैक होल एवं न्यूट्रॉन स्टार संपर्क रे अध्ययन करिबो। खोलिबो ब्लैक होल रो रहस्य, विश्व ब्रह्मांडर रहस्य भेदिबो एक्सपोसैट। এই सैटेलाइट को उत्क्षेपण पर सफलतार सहित निर्धारित कक्षपथरे अवस्थापित करा जायछि। भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था बा इसरोर यह नुआ वर्ष भेटी आज सकाळ 9:10 रे आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धावन स्पेस सेंटर 1 नंबर लॉन्च पैड रु सफलतार सहित उत्क्षेपण होईछि एही सैटेलाइट। यह होछि भारतर प्रथम पोलारिमेट्री मिशन बा एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट। PSLV-C58 रॉकेट जरिया एक्सपोसैट उत्क्षेपण करा जाय पृथ्वीर निर्धारित कक्षपथरे अवस्थापित होईछि। So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV-C58 has placed the primary satellite XPoSat in the desired orbit of 650 kilometer, 6-degree inclination. The orbit that has been accomplished, which is available through various routes, it shows excellent orbit, and the deviations from the targeted orbit is hardly just 3 kilometers in circular orbit of 650 kilometer, and inclination is 001 degree, which is one of the very excellent orbital condition. And yet another announcement is the solar panel of the satellite also has been deployed successfully. XPoSat is a space observatory, but what makes this mission more interesting is the host of new technologies that are getting demonstrated in the POEM-3 experiment. We have fuel cell, we have the silicon-based 10 ampere hour high energy battery, green monopropellant thrusters, amateur radio satellite service, and more important, a totally women engineered satellite for the comparison of solar irradiance and UV index. This, I think, showcases women empowerment in the field of science and technology, and all the payloads, in fact, demonstrate the reforms that are currently sweeping the Indian space sector. पृथ्वी चारिपटे बुली बुली विश्व ब्रह्मांडर रहस्य भेदिबा को चेष्टा करिबो एक्सपोसैट। ए सैटेलाइट कोटी कोटी आलोक वर्ष दूर रे थिबा ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर विंड नेबुला समेत ब्रह्मांडर 50टी उज्जवल उत्सर अध्ययन करिबो। एही सबु महाजागतिक उत्सरु निर्गत एक्सरे बा रंजन रश्मि संग्रह करी से सबुर संरचना जानिबारे वैज्ञानिकों को सहायता करिबो एक्सपोसैट। एथरे लागिछि दुईटी पेलोड पॉलिक्स एक्स एवं एक्सपेक्ट। 5 वर्ष पई कार्य करिबो एक्सपोसैट। Gives us an immense pleasure that we targeted to have this launch on 1st Jan. It happened. Though there were certain challenges to achieve this date, and we are very happy. On the first of the year, a very successful mission happens, and it's a very unique mission because X-ray polarimetry has been one of the unique scientific capability that we have developed internally in building instruments. But along with that, we have to build the capability to understand the data and then generate a scientific outcome. So that also we are doing. We have had user meets for XPoSat with all scientific institutions in this country. We want to create at least 100 scientists who can understand this aspect and then contribute to the knowledge of black holes to the world. तारागुड़िकरू इंधन जितेबाला शेष हो जाए से ही माध्याकर्षण शक्ति बल संकुचित हो जाती और नष्ट हो जाती। याफल से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार निर्गत हुए। तेबे ए महाजागतिक पदार्थ गुड़िकर आउ कौन कौन सब रहस्य रही से सबको भेदिब इसरोर सैटेलाइट। ए मिशन द्वारा पूर्व पारंपरिक धारणा को बाद दे वैज्ञानिक माने अधिक ज्ञान हासिल करें। ए मिशन पई 2017 मसीह प्रस्तुति आरंभ होइतला। ए मिशन पई 9.5 कोटी व्यय होइछि। आगामी 5 वर्ष पई कार्य करिबो एक्सपोसैट। एक्सपोसैट बा एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट होइछि पोलारिमेट्री जगत पई भारतर प्रारंभिक अभियान। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति उज्जवल महाजागतिक एक्सरे उत्सर विभिन्न प्रक्रिया अध्ययन करबा होछि एहार उद्देश्य। एथरे न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल समेत अन्य उच्च शक्ति संपन्न प्रक्रिया अनुध्यान अंतर्भुक्त।
एहाद्वारा एसबू महाजागतिक विषय आगुरी पारंपरिक धारणा को बाद दे वैज्ञानिक माने अधिक ज्ञान हासिल करें। भारत पूर्व एभली अभियान केवल अमेरिकार महाकाश गवेषणा संस्था नासा करथिला। Black holes have a very unique nature, which is first is it's not observable. You cannot see. You are studying something which you cannot see. So you are seeing it by its interaction with others. So it's like the spirit. You heard of spirit, but then spirit is affecting some person only you can know. Like that. Of course. No, it's not that way. In India it is, yes. It's the first one. It's our contribution. But others have done a lot of observations of black holes. This satellite will measure the polarizations of cosmic sources which are light year away. So we will measure polarizations and angular polarizations. With that, it can be found out that how magnetic field on those cosmic sources like black holes, neutron stars, how it is distributed, how its alignment with respect to, suppose we are seeing from here like a star. So with respect to that, how it is oriented. So all those details will come, and this will be very useful with time how these stars are changing. So all those details can be found out by scientific community. रे इसरो आहुरी अनेक अभियान पर लक्ष्य रखी। यह भितर सबुठारु आकांक्षी योजना होची गगनायन। गगनायन पर 2025 लक्ष्य रखा जाइछि। तेबे ए वर्ष यार प्रस्तुति एवं प्रक्रियागत विभिन्न परीक्षण हेबार अछि। यह छड़ा गोटिए मानव विहीन अभियान मध्य ए वर्ष इसरो कार्यसूची रही। तेबे ए वर्ष किंबा आसंता वर्ष भितरे दुईटी मानव विहीन अभियान टार्गेट रे रही। In 2024 is going to be a year for Gaganyaan readiness. Of course, Gaganyaan manned mission we have targeted for 2025. If you are able to do everything in 2024 very well, that target will become difficult. So you have to focus on what you want to achieve in Gaganyaan for 2024. So to have details, the beginning of the Gaganyaan program started with the TVD1 mission of the abort mission. We have 4 in the series. At least 2 more we must do in 2024. So that is our target. So by that we will have the 3 abort missions demonstration. Then we must do at least 1 unmanned mission. Our target is to do 2 unmanned missions beginning of next year, this year as well as end of this year. जो अगले जो साल में हमारा मैंने टोटल विश्व में सबसे बड़ा होने के लक्ष्य है हमारा। नासा और ईसा के बाद भारत एक बहुत बड़ा आगे आ चुके हैं, लेकिन उन लोगों ने 50 साल से पहले बहुत एडवांस थे। अभी धीरे धीरे हम उनका साथ समकक्ष होने के जा रहे हैं। डेफिनेटली बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिसमें इंडिया आगे है, जैसे कि लॉन्चिंग के बारे में। जो रॉकेट लॉन्च होता है सबसे कम खर्चा में हम लॉन्च कर सकते हैं, तो ये अभी हमारा एक एडवांटेज है। 2023 वर्षटी इसरो पर बेस सफलता आनी देथिला। एही वर्ष ऐतिहासिक चंद्रयान मिशन सफल होइथिला। चंद्रर दक्षिण मेरुरे चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग कराई इतिहास रचिथिला इसरो। चंद्रर दक्षिण मेरुरे सॉफ्ट लैंडिंग कराइबारे भारत बनी जाइथिला विश्वर प्रथम देश। सेही भली सूर्यंक रहस्य भेदिबा पई आरंभ करिथिला आदित्य L1 मिशन। गत मास आदित्य L1 सूर्यर प्रथम फोटो पठाइछि। सूर्यरु निर्गत अति बैगणी रश्मिर विभिन्न तरंग दैर्घ्यर फोटो उठाइछि आदित्य L1। ब्यूरो रिपोर्ट, OTV।